died in Australia, he would have taken his life by suicide. 9 deaths happen through suicide every day in Australia, which is not a good thing. 65,000 people in a year attempt suicide. That means we are talking about 7 people attempting suicide during the course of 1 hour, or if this conference is for 2 hours, 14 people would have attempted suicide. And the other problem of drug abuse, $10.3 billion is actually the drainage cost for purchasing those illicit drugs, leave alone the other social costs which the government has to spend. ABS, the statistics show that the government is spending the social costs or other related costs runs into billions of dollars, $200 billion, to manage or tackle this drug menace problem, illicit drug menace problem. So where lies the problem? And that is the cause of, because people are not peaceful. When we talk about a macro peace between countries, we bring it down to micro, because at the end of the day, the countries are ruled by individuals. Country as such is nothing without the individuals. So when we actually talk about peace worldwide, we have to also break it down to peace in a micro environment, what happens inside the mind. And that is a pertinent point amongst us as to why a human being is not peaceful. There is disturbance amongst us. So when we talk about disturbance or peace, the main reason is we are trying to control others. When we try to control others, naturally we won't be peaceful, because when we talk about Imam Hussein's message, or for that matter, Bhagavad Gita's message, when we say that all of us are equal, where is the question of we controlling others? Most of the wars, most of the arguments, most of the problems have happened in this world because people try to control others. Otherwise, there would not have been any war or any disagreements, even amongst the political parties. So again, you know, the political parties, yes, they are trying to do the best. And we appreciate, actually, they're doing a lot for the community. We have to appreciate the fact that they do a lot of hard work. But then what is missing is, why I gave the statistics about suicides, you would be imagining, you know, this is a spiritual conference. Why is this person coming and talking about suicides? Because that is important for us. The reason is, whilst the education, the material education currently in school tackles as to how to live our life, but it doesn't show the way as to how to tame our mind. That is a very important point, because yes, day-to-day living, say, suppose, you know, I'm an accountant, the school will teach me how to do accounts. Someone else is a science physicist. All these things are taught in school, but the spiritual education is missing. And that is where this conference, this is actually peace conference, but then, you know, we are all spiritual people. That shows that only the spiritual people can, because spirit is something which is subtle in nature. Mind is something which is subtle in nature. So only the spiritualists can understand the mind. And that is why this is important, that we continue on this path. And I request even the political parties or the minister who is here, the climate change cannot happen without a mind change. The energy climate change cannot happen without a mind change. The mindset has to change amongst the individuals. And that is an important concept. So the other important thing is, when we talk about conflicts, we have to understand that what is our goal? How can we make sure that the mind can be controlled? There are techniques which only the spiritualists can identify with. And as far as our community goes, or, you know, rather our dharma goes, we believe that yes, you know, how is it that we, as such, our founder Acharya, there is a founder Acharya, Srila Prabhupada, he went to the United States, he went to London, and the Britishers asked him, why is it that you're coming, you're a sadhu, you're coming here? So what he answered was, you've looted our wealth, you've taken our peacock throne, you've
taken all our jewels, you have taken all our wealth. But you did not take our Bhagavad Gita, which is the spiritual wealth. And I have come here to hand it over to you. So it is important that it is very important that we encourage spiritual education amongst the youth. And that will go a long way to tame the mind. And once the mind is tamed, peace is a byproduct. So I wish to end by saying that rather than controlling people and loving things, let us love people and control things. Thank you. Thank you so much. After your wonderful speech, I can't control myself. I want to share one poetry of Hindu shair, Kripa Prasad. मैं सारे मुर्तज़ा हूँ, पंजतन से प्यार करती हूँ, ख़िज़ा जिस पे न आए उस चमन से प्यार करती हूँ, अक़ीदा मज़हब इंसानियत में कब ज़रूरी है, मैं हिंदू हूँ मगर एक बुत शिकन से प्यार करती हूँ. जज़ाकल्लाह खैर. So and we are not worried about suicide rate because मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ज़रा थोड़ा हौसला बढ़ा दूँ. एक इंटरनेशनल सर्वे ये कहता है कि सुसाइड बहुत कॉमन है, खुदकशी बहुत कॉमन है, लेकिन मुसलमानों का एक ग्रुप ऐसा है जिसे शियाने हैदरी कर्रार कहते हैं. उनके यहाँ खुदकशी 0.01% है और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि हमारे पास दो ऐसी शख्सियात हैं कि जिनकी बदौलत हम खुदकशी करने का सोच ही नहीं सकते. एक मुश्किल कुशा हज़रत अली इब्न अबू तालिब और दूसरा बाबुल हवाई हज़रत अब्बास अलमदार. Thank you so much for enlightening us. Now I would like to invite our next speaker, the Honorable Chris Bowen, Minister for Energy and Climate Change, to please come on stage and say a few words, please. Assalamu alaikum. Well, my friends, thank you for the great honour of asking me to share a few thoughts with you today. To my very good friend Shams, I didn't know he had such a beautiful voice. There's a beautiful poem that he sang. And thank you for your very wise words and your trip to Australia. It was very, very humbling and, dare I say, accurate. So thank you. Well, today as we mourn the death of Imam Hussain, I'm sure we celebrate not only his life, but most importantly of all, his teachings. And the ultimate teaching of his sacrifice. That when he died, not everything was made perfect, but things improved, and the things he fought for happened more. And now, all these thousands of years later, it's a reminder that when we make a sacrifice, not everything is better straight away. But that hopefully, we improve things bit by bit. And today also, we've heard many wonderful speeches reminding us that what unites us as human beings is more important than anything which separates us or divides us. You probably don't know, but it's appropriate that this conference happens here, in this hall, in this room. Our visitors from overseas wouldn't know because, as you know, we've been through a very difficult time around the world. In this hall, at that door, we gave out food during the lockdown, the pandemic. When people lost their jobs, they didn't have any food. There was tables. We would roll up our sleeves, put together the packs, give out the food. At this hall, it was organised by the Hindu Council. When somebody came and asked for food, nobody asked what religion they are. Nobody said, do you have any religion? Or are you our religion? Just given the food. I was called during the lockdown by
some leaders of the Sikh community who said, do you know anybody who needs food? I said, yes, I do. There's a Christian nursing home where the people are afraid to leave to go shopping because they're old and they don't want to get sick. And he said, we'll have a truck of food there this afternoon. And I could give you story after story after story, the Muslim community coming together to support the Christians, etc., etc., etc. This wasn't a speech, it was just doing. And speeches are important. We've heard some beautiful ones today. Doing is important, living is important. Australia's what we call a multicultural country, like the United States, like Canada. Some people say Australia's a melting pot. You know, we have the slow cooker and you put everything in and things melt together. I don't think that's right. Because when you melt, you lose something. When we come together, like a beautiful salad, we keep everything together, but we complement each other. The tomato tastes better with the lettuce. Still different, but better together. Do you think Imam Hussain would agree with that? I hope so. So I'm not a religious scholar. I'm not a learned historian of the great religions of the world, like our honoured guests. I'm simply a man doing a job to represent my community here and to serve in the Cabinet of Australia. And every day that job, regardless of where I am or what I'm doing, is trying to help people, bring them together. It's what you do here too. It's what the Panjtan Welfare Association does as well. So I've learned things today in the short time I've been able to be here. I've taken joy away. I couldn't understand Shams's poem. But I could understand what was coming from his heart. And I could understand the beauty in the words. And I feel better for having come. So thank you for sharing this afternoon with me. I'm sorry I can't stay for the whole conference. I've been very busy this week in Canberra and I have some catching up to do with lots of different jobs. But I didn't want to miss the opportunity to be here and spend some time with you today. Thank you very much. On behalf of Panjtan Welfare Association, as Chris has done a lot of job with us, thank you. This is an appreciation. Oh, thank you. Oh, wow. Beautiful. Thank you. Thank you. Now I should be in the photo. Yeah. Do you want to be? You have enough, I think. I've done a lot, but last time. Thank you to the Honorable Chris Bowen, Minister for Climate and Energy. And from the Pakistan-Australia Association, we thank you for being a guest here. Our next guest is representing the Sikh community. He's Professor Mahinder Singh. If I can invite you, please, sir. Come on stage. Thank you. Thank you very much for inviting me. Thank you very much because I learned new things today. So learning is the process of life anyway. So when Izaz Saab called me at that time, I wasn't sure who is calling me because I haven't have your number with me, so I thought, oh, maybe someone is calling me, so it's better to join anyway. And Saturday is sometimes busy for me, but anyway, at this time I said, straight away I said, yes, I'll come. Thank you. So, and regarding Karbala, yeah, in childhood memories, yes, I know we have some poems, we have some stories in our Punjabi language as well. So we know there is a war, Karbala, but in depth, we don't know much, but few words, few things.
Yeah, Fatima name is there, so Kabla name is there, and Imam Hussain name is there. So we don't know much about those things. But when I was just going through a few months back with the one Punjabi book, and that was about the martyrs and about those things. And straightway when the thing came in my mind, so yes, there is I can't speak much in English, can't speak because I prepared in Punjabi actually, but yeah, wherever I feel I'll use Hindi and Urdu because I know few things. My topic for my research in back home in my PhD is partition of Punjab and Punjabi short story. So जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्मिया नहीं इस गल च मैं बिलीव करता हूँ. So so anyway, when I came here, the speeches started about the peace. So I think if I pull out these papers, then they are going different way. But I'll try to do the justice with my little bit research. But it's not research; it's basically cut and paste from books. So basically from one book, but with different articles. So I'll go with those things. I know Imam Hussain, we called Shaheed-e-Azam actually. I'm not sure if I'm wrong anywhere, please stop me or please later sooner or straightway just stop me. So Shaheed-e-Azam, we know like weather science, we progressed a lot, where there are so many techniques in life, but you can't control death. Simple death is different thing, but for one cause, especially for community, especially for sacrifice for everyone is different thing. So that's what I learned, like Imam Hussain, they sacrificed themselves for other people to spare the lives of others, to do the justice, to bring the justice in the lives of everyone. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशान होगा. So a शेर वाकई ही sorry, I come to try to come in the go in Hindi, yeah. Hindi Punjabi mix karo koi gal. Yeah. So Shaheed, अंग्रेजी मजा भी नहीं होता. that's true actually, that's true. And especially from me, because I only use English for work. शहीद उसको ही कहा जाता है जिसके जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है ना. सो अपनी जान तक कुर्बान करता है, उसको ही शहीद बोला जाता है. उस शहीद की शहादत का जो फ्रूट है, जो चीज़ मिलती है, वो जाके आने वाले लोगों को ही मिलती है. क्यों? क्योंकि बच्चा लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगर हम ऐसी आपने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है तो बच्चों को ये चीज़ें शायद हम घर पे इतना नहीं बता पाते, लेकिन इन ऐसी जगहों पर हम उन्हें अच्छी तरह समझा सकते हैं कि ये चीज़ क्या है. So one more thing, can I bring out? That's my specs. I can't see actually. Yeah. So जो भी सच्चाई के मार्ग पर चलता है और अपनी जान कुर्बान करता है, उसको आने वाली जो नस्लें हैं वो हमेशा उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उनके लिए वो यादगार बनते हैं. सो उस अतीत के ऊपर, उस विरासत के ऊपर हम फ़ख्र भी महसूस करते हैं. शहीद जो अपनी शहादत देकर अकीदे की गवाही पेश करता है, शहादत कोई लाइक अनचाही मौत का नाम नहीं है. ये किसी न किसी ज़बर या जुल्म के अगेंस्ट जाके कुर्बानी करके उसकी स्थापना होती है. ये कोई मजबूरी भी नहीं है कि जाके शहीद हो जाओ, लेकिन ये सिद्क सबूरी मानी जाती है कि जिसका जो तशद्दुद एंड शोषण के अगेंस्ट उसकी जीत भी होती है. शहादत किसी
निर्भय शक्ति का, निर्भय वर्ड पंजाबी का है, निर्भय जिसमें कोई बंदा किसी से डरता नहीं है, निर्भय। निर्भय शक्ति का प्रदर्शन भी नहीं है, निर्भय, निर्भव और निर्वैर है, ये किसी के साथ वैर नहीं है। शहीद वो शख्सियत है जो मौत के डर से बहुत ही दूर है। वो like I'm trying to translate and then I get lost. वो जो भी ये मैं पंजाबी का ही वर्ड यूज़ करूँगा, सॉरी, यहाँ पे, कि वो हर समय तैयार रहता है कि मुझे अच्छे काम के लिए आगे जाना है और काम करना है। शहीद किसी एक शख्स की शख्सियत को बचाने के लिए काम नहीं करता, वो अपनी कौमियत के लिए काम करता है और आज़ादी या धर्म की रक्षा के लिए काम करता है और उसी के लिए वो अपनी कुर्बानी भी देता है। ऐसे लोग जो शहादत पाते हैं वो किसी के ग़ुलाम रहना कभी भी पसंद नहीं करते। शायद यही रीज़न होता है कि वो किसी भी समझौते में वो नहीं आना चाहते। उनका मेन पर्पस ह्यूमैनिटी की भलाई ही होता है। जैसे ये लोग शहादत पाते हैं, उनका पर्पस शायद अपने आप को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि उनका पर्पस जो है वो लोगों में अवेयरनेस लाना होता है कि इनजस्टिस जो हो रहा है उसकी बजाय हमने ये रास्ता अख्तियार किया है। तो पहली स्पीच में आके गई है अभी बात कि हम अगर ऐसी लड़ाई होती तो धर्म ऊपर ज़्यादा लड़ाई हो रही होती, जहाँ हम बिलीव करते हैं कि गॉड वहाँ बैठा है। तो गॉड तो एक ही है, रास्ते भी एक ही हैं, लेकिन रास्ते डिफरेंट है, मंजिल तो एक ही है सभी की। तो मेन तो अवेयरनेस ही होती है कि बच्चों नहीं, मतलब आने वाली नस्लों के मनों में अवेयरनेस हो सके। शहीद को ना तो वो, मतलब वो काफ़ी ऊपर उठ के जो शहादत अपनी देता है, लेकिन वो शहादत के मुकाम को उस समय ही हासिल करता है जब वो अपने आप को उससे ऊपर उठा लेता है कि मौत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके लिए मौत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह से, भगवान से, वाहिगुरु से वो एक हो जाता है। वी नो लाइक इट्स फ्रॉम अरबी लैंग्वेज, लाइक कुरान में, शायद मैं ठीक बोलूँ या नहीं, कुरान में इसकी वर्तों जो है गवाह के तौर पे हुई है कि साक्षात माना जाता है, साक्षी माना जाता है, जो मैंने पढ़ा है। लेकिन इंडियन संस्कृत में इसका, भारतीय लैंग्वेज में इसका कोई, ये मेन पार्ट आएगा शायद रिसर्च का, लेकिन कि भारतीय संस्कृति में इस शब्द के समान कोई शब्द ही नहीं आया, शहीद के समान, क्योंकि शहादत परंपरा भारतीय परंपरा में था ही नहीं। बलिदान था लेकिन शहादत नहीं थी। ये किसी और संस्कृति, सामी संस्कृति से आया। शुहुद वर्ड जो है वो वर्ड यूज़ किया गया ग्रीक लैंग्वेज से, उसमें युताप वरता गया, जिसके अर्थ भी गवाही ही हैं। सामी परंपरा में शहीद वो होता है जो विश्वास के ऊपर या जुल्म सहन करने की बजाय अपने आप को शहादत देता है। ये मौत से डरने की जगह मौत को चूमने वाली बात होती है, प्यार करने वाली बात होती है। शहीद शब्द ग्रीक लोगों की तरफ से पहली तरफ इब्रानी या मोज़ेस कौम के लिए वरता गया, क्योंकि यहूदी लोग मिस्रियों की ग़ुलाम ज़िंदगी बतीत कर रहे था। वहाँ से फ़िरौन जिसके जुल्मों का लोग शिकार हुए, वहाँ से ये आगे आया। मैं इसको थोड़ा कट शॉर्ट भी किया जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसलेशन में मुझे भी एक्चुअली नहीं आ रहा, कंफर्ट नहीं मैं फील कर रहा, लेकिन इट्स ऑल राइट। जो कितने बंदे पंजाबी समझेंगे?
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਫਰटेबल ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਕਰੋ। मैं कोशिश करूँगा बीच में हार्ड वर्ड्स को ट्रांसलेट कर दूँ, वो शायद इजी रहेगा, क्योंकि मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा एक्चुअली बोलने का, सॉरी। पंजाबी ठीक। हाँ ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਇਸਲਾਮੀ ਹਦੀਸ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਨਕੀਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਅਤ ਨੇੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਮੌਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਜੀਵਿਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ 2 ਦਰਜੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਕਬਰ, ਸੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਸਕਮੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਪਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ सिख धर्म ਨੂੰ पढ़ा, सिख धर्म ਨੂੰ जाना। अब मैं थोड़ा हिंदी में बोल लेता हूँ क्योंकि पढ़ने के लिए मेरे सामने कुछ नहीं है। तो जितना भी मैंने मतलब सिख रिलीजन को जाना, समझा और बचपन से जाना, उसको मैंने टीच किया। क्योंकि जो गुरु ग्रंथ साहब में लैंग्वेजेस हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब में, क्योंकि पर्शियन भी काफ़ी है, अरबी भी है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी राइटर्स हैं, सभी की बानी को, बाबा फरीद वहाँ हैं हमारे पास बैठे हैं। तो बुल्ले शाह, मैंने वैसे पंजाबी लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, शाह हुसैन, बुल्ले शाह वैसे इन टच हूँ। तो मतलब जितनी भी बातें आ रही हैं तो बातें तो कॉमन आ रही हैं कि हमें करना क्या है। लेकिन इन सब बातों के पीछे मैं, थोड़ी माताएं बैठी हैं, थोड़ी बहनें बैठी हैं, लेकिन मैं बात एक ज़रूर बोलूँगा कि हम अगर अपने बच्चों को कुछ देना चाहते हैं तो शायद वो मर्द की फितरत में नहीं है, मर्द नहीं दे पाएगा, मर्द जस्टिस नहीं कर पाएगा जितना औरत उसको कर पाएगी।
तो बच्चों को सिखाने के लिए जितना कुछ भी आप एफर्ट्स कर सकते हैं उतना आप ही कर सकते हैं। सो मर्द लेक्चर दे सकता है, काम कर सकता है, पैसा ला सकता है कमा के, लेकिन जो संस्कार हैं, संस्कार माताओं बहनों से ही जाने हैं बच्चों को। सो इसलिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म की या पीस की, हम कैसे परवरिश कर रहे हैं बच्चों की, वहाँ से आ रही है, तो वहाँ से ही सीखने की ज़रूरत है। ये हमारे गुरुओं ने भी बोला है। हमारी गुरु नानक देव जी ने मतलब शहादत के बारे में एक पंक्ति लिखी हुई है, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। सो गुरु अर्जन देव 5th गुरु, 10 गुरुज हैं, आप सब जानते हो। 5th गुरु, सो he did sacrifice. 9th guru, he did. 10th guru and his kids, all like these are the sacrifices. And still in Sikh religion, still the lot more sacrifices going on due to policies and stuff, so whatever it is. So we can't control those things, but we only can control, okay, के हम बच्चों को क्या दे पाएंगे, हम बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। हम उनको यही चीज़ के लिए हमारा ज़ोर होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए घर में, कि जो भी हम पाठ करते हैं, जो भी हम अल्लाह का, भगवान का, किसी का भी नाम लेते हैं घर में, तो हम उस चीज़ को बच्चों में लेके आएँ, ताकि वहाँ से हमारे अंदर जो हम हेल्प करते हैं, जो अभी क्रिस बॉन बोल के गए हैं कि हमने यहाँ ये हॉल यूज़ किया, वेदर हिंदू धर्म ने किया, वेदर आपने किया, वेदर सिखों ने किया, किसी ने भी किया, तो पर्पस तो उसका एक ही था ना, कि भूखों को रोटी खिलाई जाए। तो पर्पस तो हमारे एक ही है ना, कि वो चीज़ कैसे आएगी, वो चीज़ सेवा से ही आती है, कि हम जब हेल्प करते हैं किसी की, वहाँ से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं ये चीज़ें। सो इतना कहते हुए मैं अपना इसको बंद करता हूँ। सॉरी मैं जस्टिस नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आने के लिए दिल चाहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छी तरह करके लेके आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार जी, आपके ऊंची पगड़ी वाले बड़े सगीर के बहुत मशहूर शायर सरदार कमर बेदी साहब का जो वो कलाम है, उसमें से कुछ पढ़ूं कि हम किसी दीन से हों, कायदे किरदार तो हैं, हम सना ख़्वान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूरे पे अहमद मुख्तार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद प्यारा। तो अब आपके उससे तो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बेहतरीन कोशिश की। और जो आपने कहा है, जो माएँ यहाँ मौजूद हैं उनके लिए, कि वाकई ये एक इशारा दे दिया सरदार साहब ने कि माओं का जो बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, और हमारी माओं का तो बहुत ये एजाज़ है कि उन्होंने हमें अपनी गोदों में जब परवान चढ़ाया तो दर्से करबला सुनाकर चढ़ाया। तो हरी में कल्म व नज़र की अज़ा हुसैन की माँ, जहाँ जहाँ है रिसालत वहाँ हुसैन की माँ, अली है जौफ में काबे की छत पे है मेहंदी, खुदा का घर भी है तेरा मकाम हुसैन की माँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक तरफ इशारा किया। मैं आगे चलती हूँ। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं और हमारे साथ हमेशा मुख्तलिफ मौक़ों पर रहते हैं, प्लीज एजाज गिल साहब, मैं आपको दावत दूंगी कि आप आइए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मैं आज शाम ख़ास तौर पर पंजतन वेलफेयर सोसाइटी और पाकिस्तान एसोसिएशन का तहे दिल से ममनून हूँ कि आज शाम उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि हम तमाम मज़हब के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो सकें। शायद आप मुझे जानते हैं, जिस तरह मेरी बहन शफकत जाफरी ने कहा, मैं अक्सर आप लोगों के साथ मिलता हूँ। पाकिस्तान में भी मेरा एक पीस प्लेटफॉर्म था और यहाँ पे शायद आप जानते हैं रज़ा, आसम रज़ा को, उनके भी मैं इमाम बारगाह में गया हूँ, ग्रैंडविल में भी गया हूँ, मैंने स्पीच किया। और आज मुझे मौका मिला कि मैं इस पीस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आप लोगों के साथ बोल सकूं। जब खुदा ने आदम को बनाया, उसको बागी अदन में रखा, तो उसका कोई मजहब नहीं था, कि था
आलम बैठे हुए हैं, आदम का कोई मजहब नहीं था, लेकिन आदम के बाद जब मूसा के वक्त में शरीयत दी गई तब मजहब का आगाज हुआ। और फिर आगे चलते चलते जब दुनिया बढ़ती गई, और खास तौर पर यह आज मैं कहना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म से कि इमाम हुसैन और हमारा पुराना ताल्लुक है। शायद आप नहीं जानते, ये किताब किसी ने पढ़ी है तो जरूर पढ़ना। मैंने इसकी स्टडी की। जब इमाम हुसैन करबला में थे, यजीद की फौजों ने घेरा हुआ था, जंग थी। शायद आप में से बहुत सारे इस बात से वाकिफ नहीं है या वाकिफ होंगे कि एक मसीही जॉन नाम का शख्स, जिसके अभी नई शादी हुई थी, उसका छोटा बच्चा था, उसकी मां थी, उसकी बीवी थी। जब वो उससे गुजरे तो उन्होंने देखा कि खेमे लगे हुए, तो पूछा गया, तो वो भी इमाम हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए, जंग लड़ी उन्होंने। वहाब अलवी का नाम आपने सुना होगा, वो भी इमाम हुसैन के साथ करबला में उन्होंने शहादत नोश फरमाई। इसलिए मैंने कहा कि हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक चला आता है। और आज मैं ये बताना चाहता हूं, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं कि मेरा ताल्लुक पेशावर से, पाकिस्तान से। तो जब मैं कोहाट, टल, पड़ा चिनार, मैं बीइंग प्रीस्ट काम करता, कितने लोग पड़ा चिनार के बैठे हुए? आपके टायों के अंदर जगह है ना, पड़ा चिनार में है ना, हमारा चर्च है ना वहां। और मैंने ये गवाही दी कि अंग्रेज वहां चर्च नहीं बना सके। उस वक्त संगे मुरजान वहां पे पिए था, वहां के मलकों ने हमें 4 कनाल जगह दी। ये 1983 की बात है, और 60,000 रुपया दिया। उस वक्त बहुत ज्यादा ये पैसे थे। हमने चर्च बनाया जो अंग्रेज नहीं बना सके। ट्राइबल एरिया में, कुरम एजेंसी में नहीं बना सके ना। पड़ा चिनारियों सही कह रहा हूं ना। तो जब उसका हमने ओपनिंग किया तो मेरा बिशप, उस वक्त बिशप खैरुद्दीन थे, खुदावंद में सो गए। जब ओपनिंग के लिए आए तो मलकों ने कहा यह आपका बिशप नहीं है, यह हमारा भी बिशप है। और कुरम एजेंसी के बाहर उन्होंने क्लाशनकोपो से बिशप का इस्तकबाल किया और सारे खाने का इंतजाम मलकों ने किया। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई जो आज तक मुझे भूली नहीं है। मेरे चर्च में आपने आल्टर देखा होगा, जिसको हम पाक बेस कहते हैं, जिस तरह ये मेरी बहन जाफरी बैठी हुई है। तो उन्होंने कहा कि आपको पादी साहब इसकी अहमियत का पता है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता यार। उन्होंने कहा कि जब इमाम हुसैन का सर उन्होंने कलम कर दिया, तो जब उस सर को लेकर आ रहे थे तो वहां का जो काहिन था, जो प्रीस्ट था, जब आगे फौजों ने रोका हुआ था तो प्रीस्ट ने उन्हें जगह दी। प्रीस्ट ने जब इमाम हुसैन के सर को धोया तो वह सर चमक रहा था। तो प्रीस्ट ने कहा कि उन्होंने क्यों शहीद कर दिया। और किताब में पढ़ रहा था कि उन्होंने 30 दिनार देकर उन्हें रात उधर ठहराया प्रीस्ट ने, और उस आल्टर पे रखा उनका सर। इसलिए उसने कहा कि हम इसकी चूमते हैं, कदर करते हैं, क्योंकि हमारे इमाम हुसैन का सर इसके ऊपर रखा गया था। उस वक्त क्योंकि वो पत्थर का जमाना था, पत्थर का वो बना हुआ था। मेरे अजीज बेटियों, बहनों, दोस्तों, भाइयों, हमारा
रिलेशन है। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम कजन हैं। कजन नहीं है? नहीं कजन? मौलाना साहब, हम कजन नहीं है? हम इसहाक में हैं, आप इस्माइल में हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हजूर पाक में से खुदाइयत का चेहरा नजर करते हैं, हम हजरत मसीह में से खुदाइयत का चेहरा ढूंढते हैं। यही बात है। मेरे मसीह ने जो पीस का पैगाम दिया, जो आलम है वो जानते हैं कि जब उन्हें यहूदी लोगों ने, फकियों फरीसियों ने, जिस तरह इमाम हुसैन को यजीद की फौजों ने शहीद कर दिया, मेरे मसीह को जब उन्होंने सलीब पर दिया, तो फिर भी वो कहते हैं कि इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। जब यजीद इमाम हुसैन को शहीद कर रहा था, वो उसकी फौजें नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में इसका नाम दुनिया के अंदर होगा। मेरे अजीज भाइयों बहनों बेटियों, मैं एक बाइबल में से बात कोट करना चाहता हूं कि जो यरूशलेम का इलाका है वो ऊपर है, लेकिन यरू का इलाका नीचे है। एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा है, डाकुओं ने उसे घेर लिया है, उसको मारा है, धमोया किया है, लेकिन मेरे जैसा एक मजहबी रहनुमा उधर से गुजरा है, लेकिन वो कतरा कर चला गया। मजहबी रहनुमा मेरे जैसा गुजरा है, लेकिन कतरा कर चला गया। एक और लावी गुजरा है, वो भी लेकिन एक सामरी वहां से गुजरा है, अभी मेरा हिंदू भाई चला गया। जिस तरह ब्राह्मण जात के हिंदू बड़ी जात के हिंदू हैं, लेकिन वो निचली जात के हिंदुओं से नफरत करते हैं, शूद्र जिन्हें कहते हैं। सामरियों को यहूदी शूद्र कहते थे। उसी सामरी ने उसको मरहम पट्टी की है, उसको तेल लगाया। ये इंसानियत है। यहां पे मजहब की बात नहीं है। वो तो जो मजहबी रहनुमा वो तो गुजर गया, क्योंकि उसके अंदर एक मजहबी जनून था, लेकिन वो शख्स जो उधर से सामरी गुजरा है, उसने मरहम पट्टी की है और उसको गधे पे बैठ के सराय में ले गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आज हम उस इंसानियत को भूल चुके जिसके लिए खुदावंद ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा है। हमारे जो रहनुमा थे, हमारे जो इमाम थे, हम उनकी तालीम से दूर चले गए। उन्होंने हमें अमन का, सुलह का, सलामती का पैगाम दिया। आज कहां हमें सुलह नजर आ रही? फलस्तीन के अंदर सुलह नजर आ रही है? कश्मीर में सुलह नजर आ रही है? जुल्म है, सितम है। आज इस प्लेटफॉर्म से चैलेंज करना चाहता हूं कि हमें इस पैगाम को आगे लेकर जाना, इस पीस के पैगाम को आगे लेकर जाना है। अगर हम ये अहद करते हैं तो जहां पे जंग है, जदल है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है ना कि कबूतर जाल के अंदर फंस गए, लेकिन एक एक करके वो उड़ते हैं। लेकिन जब जाल को लेकर सारे उड़ेंगे तो फिर उड़ सकते हैं, अकेले नहीं उड़ सकते। तो जब हम एक पीस का प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं तो फिर वहां से दूसरों तक पैगाम भी जाना चाहिए। यही नहीं कि हम स्पीच करके मेरे सिख भाई, मेरे हिंदू भाई या हमारे मौलाना साहब या मैं तकरीर करके चला जाऊं, लेकिन हमें अमली सबूत भी देना कि हम उस वाहिद खुदा को मानते। जब हम उस वाहिद खुदा को मानते हैं तो हमें इंसानियत की कदर करनी। पहले इंसानियत है, उसके बाद मजहब की बात होती है। और आज जो मेरे एक्सपीरियंस में है, तजर्बे में है, लोग पहले मजहब की बात करते हैं, फिर इंसानियत की बात करते हैं।
मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहता हूँ। मैं परसों फेसबुक पे देख रहा था, लेकिन वो शख्स को मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोल रहा था, सिख मज़हब के ख़िलाफ़। तो मैंने कहा कि ये पीस हम दे रहे हैं, हमें तो एक दूसरे को गले लगाना है। मेरा मसीह सलीब पर था, जो वाक़या इमाम हुसैन के साथ हुआ वो उसके साथ साथ मिलता है। उन्होंने पानी मांगा है सलीब पर, तो उसको सिरका दिया गया है जो उसके दुखों में करवाहट पैदा करे। इमाम हुसैन के लिए पानी उन्होंने बंद कर दिया है। उनके बच्चे को जो छह माह उसको नेज़े की नोक पर शहीद कर दिया। फ़िरौन ने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया ताकि हज़रत मसीह कत्ल हो जाए, लेकिन उसकी माँ ने उसको बचा लिया। ये इंसानियत नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, हमें आज इस प्लेटफॉर्म से कैद करना कि हमें दूसरों तक उस पैगाम को पहुंचाना। जिस तरह मैं कह रहा था ना, हमारा कंट्रीब्यूशन है। मैंने अपनी बहन जाफरी को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे वो नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी करबला में होता है तो वहाँ पे क्रिश्चियन दस्ता होता है। क्रिश्चियन दस्ता होता है जो करबला के अंदर अपनी क्रॉस उठाकर वो चलते हैं, क्योंकि हमारे भी वहाँ पे शहीदों की मज़ार है। इसलिए मैं शुरू में कहा, हमारा एक रिलेशन है, तल्लुक़ है जो आज तक चला आता है। तो आज शाम इस प्लेटफॉर्म से मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ एक बार फिर इजाज़ खान का, उनके सारी टीम का, कि उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में पीस पे बात कर सकूं, इस रिलेशन को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि आने वाले वक्त में हम एक दूसरे का इसी तरह इज़्ज़त और एहतराम करेंगे और फिर इसी तरह की गेट टुगेदर करेंगे, ताकि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि हम पीसफुल लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। हम कुछ जंग नहीं चाहते, बल्कि हम अमन चाहते हैं। जो हमारे इमाम ने, जो हमारे मसीह ने हमें दिया, हम दूसरों तक शेयर कर सकें। खुदावंद ताला आप सबको अपनी अमान में और अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने प्रूव किया कि निशान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। नमाज का वक्त हो गया है, बस हमारे 2 स्पीकर्स रह गए। हम बस इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं दावत दूंगी मौलाना नज़ीर और हसन थानवी साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहलि बैतिही रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم बुज़ुर्गान महतरम बिरादरान अज़ीज़ मोहतरम इस्लामी माँ और बहनें ऑनरेबल गेस्ट और पंजतन वेलफेयर सोसाइटी और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन और जुमला अरकान मैं सबसे पहले अपनी अहलिया और बच्चों की तरफ से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस मुबारक मजलिस में इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मौका अता फ़रमाया। Respected brothers and elders, honorable guests, respected sisters in Islam, before I proceed, I like to acknowledge the traditional owners of this land where we are standing, present, past, and emerging, and we show our respect. They allow us to stay and flourish in their land. ये मजलिस उस मुस्तकिल तहरीक और उस मुस्तकिल काम और तवज्जो का सिलसिला है जिसकी बुनियाद सैयदुल अंबिया ख़त्मुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी और वो था तौहीद का एहतमाम। इंसानियत, the whole mankind was adopted by evil powers and they were distracted from Sirat-e Mustaqim, the straight path given to us by Almighty, and we were given the title and the status of a best creation. The best creation, and unfortunately we lost that value or self-esteemed we were given. We were given the title of Ashraful Makhluqat, and best creation means there's no other creation better than us, and we are deputy on earth of Almighty. My brothers and elders, I like to congratulate the organizer of this conference, and I also pay my respect all the respected scholars and elders who showed their presence and explain their views. No doubt about it, as a human being we are all one, and there is no way that we disunite ourselves. But the reason is that following this opposite power, we sometimes lost, distracted, and that's why
we distribute it into different ideologies and religion. Allah, God Almighty, whatever name you give, is one. We know that. La ilaha illallah. And then, obviously, his deen or his sharia cannot be many. But what we have on earth is more like all his sharia, all his deen is a different colors, different shape, different style. I mean, we all have with our clothing, but they are all different things. As long as we believe in Allah and all his apostles which help us to live on this earth, guided us how to live on this earth, we are successful and we can live in peace. Problem is that as soon as we leave the Sirat-e-Mustaqim, the straight path, who guided us towards God Almighty, which he mentioned in Quran-e-Kareem and all the other heavenly books, we cannot move out and we cannot distract it. It's something like that. If I'm running in a highway and start thinking that I take the side road or side jungle, maybe I arrive some time later or maybe I lost. So better stick with that. That's what Allah Ta'ala said. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah. Behold the rope of Almighty as a human being. The rope of Almighty is your guidance given through your apostles, your prophets. Alayhimus salatu wassalam, peace be upon them. Today, we believe everybody complain that we lost and he is not right and they are not right and fighting, and what is the use of it? Look at the worldwide situation, confrontation. At home is not an issue just in Australia, it's everywhere. We were talking in early, honorable guest was talking about the suicidal rates. What is this? Because can't see any light in front of them. That's why कोई ज़िंदगी की रोशनी सामने नज़र नहीं आती, ज़िंदगी का मकसद समझ में नहीं आता। हालांकि अल्लाह ताला ने हमको मकसद एक दिया है, और इस मकसद के रहनुमाई में जब हम देखते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family and all his companions, they have nothing to do but promote haqq and truth. Sayyidina Imam Hussain radiyallahu anhu and his family, they know that they're going to be perished, they're going to be punished, but he set a precedent, he set a rule, worldwide rule. And I am proudly like to quote the famous quote of Allama Iqbal Lahori, rahmatullah alayh. He said that ज़िक्र अरब के सोज़ में फ़िक्र अजम के साज़ में नए अरबी मुशाहदात नए अजमी तख़य्युलात. If we talk about the history of Arab, unfortunately they lost their guidance. There is no vision left. There is no terminologies and a goal of life left. काफ़िले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं,
काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे है ताबदार भी गेसुए दजलो फुरात. When we see the things coming out from the origin of Islam, from the origin of religion, from the origin of Abrahamic, system and his family, we find out that there is no Hussein coming out from this, because the president, he said that he sacrificed himself and his whole family. And then सिद्क़ खलील भी है इश्क़, सब्र हुसैन भी है इश्क़, मारक़े वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क़. That was the problem, that we lost the ishq, the love of Allah. We lost the love of our prophets, his family and his president and his message. Message given by Torah, given by Zabur, given by Injil, and given by Quran. If we see that, so we following footstep of the evil power sometime, or majority of the time. Iblis, so-called shaitan, devil, we say in our language, he has only 4 ain. Ain is the Arabic alphabet. Iblis के पास 4 ain थे. अगर 5वां भी होता तो ये तमाशा ना होता. The ain of he was alim, and ain he was abid. Ibadat guzar, worshipper. Alim is scholar. Iblis is the best scholar. Iblis was used to do worship of Allah for more or less 6,000 years. Iblis was aqil, intellectual. Iblis was arif, the person who knows Almighty, awareness. 5वां ain nahi tha uske paas. He was not a ashiq. If he would be ashiq, we don't have this problem. So check with us, we have ishq. And that was the ishq who gave Imam Hussain this courage, this strength, that I don't want to meet this tyranny, this zulm. I don't like it. My grandfather didn't like it. My father didn't like it. My brother didn't like it. How come I accept it or compromise it? It's better I have this ishq of Allah and I meet him. I can hold my head in front of Allah bleeding that yes, I gave my blood as I promised to you. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. If you're really struggling your best in the path of God Almighty. I did that. And look at my family. We are all presenting ourselves in front of you. My respected brothers and elders, what lesson we learned after 1400 years. We are sitting, we remembering Imam Hussain alayhi salam, we remembering his family, but what our way of life, how much ishq we have, how much, a feeling of sacrifice we have. Hazrat Ibrahim Khalilullah alayhi salam, when he put knife on the neck of his own son, do you imagine what his heart condition at that time? But he did, he showed. No. Your honor, yani Allah's honor is more important than anything else, and even my son, who Allah Ta'ala bless him after so many years, old age. And then, when we come down to Karbala,
all sons and family members. More than that. And Hazrat Ibrahim alayhi salam, obviously, he was thinking, if I have more sons, I'll sacrifice more. So my respect, brothers and elders, once again, I like to congratulate all of you that who organized this organization, but it's not that just we listen and go. This is the time we make intention. If I have to sacrifice, and it is the time of sacrifice. I'm not saying that we just come out and, holding the sword and then, no, I have to do this. No, sacrifice means to keep the peace, it is sacrifice. Surah Asr, Allah Ta'ala swearing the time, Innal insana lafi khusr. Definitely insan is in great loss, except those who have iman, the believe in God, amal salih. Amal salih means the good deeds. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ إِنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. They, invite each other to do haqq, to say haqq, to play haqq, to practice haqq. And when you do that, you have to face atrocities. You have to face problem. That's why it is said, tawasaw bil haqq, tawasaw bis sabr. You have to have sabr and patience also. So have the peace or organizing the peace. We face atrocities, but we have to do it patiently. We have to, our suffering, we have to accept it in a way, no, it's part of that. And Allah knows my heart, Allah knows my reward. And end of the day, at least I can say to Allah, I done my best. By reminding the story, I take your permission. When Sayyidina Ibrahim alayhi salam was thrown in the fire, there was a small bird bringing some water in the beak and throw in the fire. Somebody asked, what you doing? Do you think you can put off this fire with these few drops of water? And the bird said that, I know, I can't do that. But at least in front of God, I can say I done my best in my capacity. We should do our best in our capacity. And continue with that. Never disappoint yourself. Never disappoint. Allah Ta'ala said, O my Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. O my Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, explain to my humble servant that never disappoint from my rahmat, from my mercy, those who done wrongdoings with themselves. Come back. Come back. Door is open. And the quotation I mentioned about the ishq and the 4 ayn and 5 ayn of, that is come from my great-grandfather, Hakimul Ummat Hazrat Maulana Ashraf Ali Sahab Thanvi Rahmatullah Alayh. He mentioned this, and we learn when we early age, and I think it's a good thing to ponder. And Jazakallah khair. Thank you so much for your opportunity. Make dua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh God, help us to keep our hearts united, our souls united. Oh God, raise the status of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his children, his companions, his beloved daughter Sayyida Fatima radiallahu anha, and his brother and son-in-law Sayyidina Ali, Imam Ali karramallahu wajha, and his grandson Sayyidina Imam Hassan and Imam Hussain rizwanullahi ta'ala alayhim ajma'een, and all the Ahl Bayt, especially those who sacrifice in the field of Karbala. Ya Allah, we know that the sign of evil is from a sign of Yazid, and sign of Haqq is from Sayyidina Imam Hussain alayhimus salatu wassalam.
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जज़ाकल्लाहु खैर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बशर का नाज नबूवत का नूर है हुसैन, जनाब फातिमा ज़हरा के दिल का चैन हुसैन। कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम का इलाज, कहा नमाज ने बेसाख्ता हुसैन। हुसैन, मैं दावत दूंगी कि इस पे रोशनी डालें और हम सब की इस इबादत को कबूल करवाने के लिए मौलाना एजाज हुसैन साहब को, जो कि बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं, और हमारे साथ ये दूसरा उनका इमाम हुसैन पीस कॉन्फ्रेंस है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिन हमज़ातिश शयातीन व औज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नशकुरुहु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक्त बहुत हो चुका है और नमाज का वक्त भी दाखिल हो चुका है। सबसे पहले अपनी तरफ से जो है पंजतन वेलफेयर एसोसिएशन और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन वालों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि बेहतरीन सेमिनार इनक़ाद करने के लिए कि जो इस वक्त ज़रूरत है वक्त है, और आप सबको भी जो जितने भी मोमिनीन और मोमिनात यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, आप सबको सफ़ीने हुसैन में बैठने के लिए आज तबरीक पेश करता हूँ। आप सबका मुख्तलिफ़ अदियान या मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को एक ही जगह सफ़ीने हुसैन में इकट्ठा देखकर यकीन हो जाता है कि हुसैन ने अमनीयत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया था। हज़रात देखिए, वक्त बहुत कम है, मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए जो है अपना सब कुछ फ़िदा किया। रईस आले मोहम्मद सादिक़ आले मोहम्मद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, वबज़ल मुहजतहु फ़ीक लिइबादिका लियस्तनक़ज़ इबादिका मिनल जहाला व हैरतिल ज़लाला। बहुत ही अजीब जुमला है ये कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। हत्ता कि आप देखें असहाब इमाम हुसैन में 80 साल के बूढ़े से लेकर 6 महीने के बच्चे तक जो है, ये ख़ुद सबसे बड़ी दलील है कि अगर कोई अमन पसंद न हो तो उसके लश्कर में 80 साल का बूढ़ा या 6 महीने का बच्चा नहीं होता है। तो ये दलील है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस लिए अपना सब कुछ फ़िदा किया। इमाम सादिक़ फरमाते हैं, लियस्तनक़ज़ इबादक मिनल जहाल व हैरतिल ज़लाला, लोगों को जहालत से निकालने के लिए और ज़लालत से निकालने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जहालत थी, इस वजह से फ़र्ज़ंद रसूल के गले को काटने के लिए मुसलमान निकले थे, जो बज़ाहिर अपने आप को आशिक़ पैगम्बर कहते थे। जहालत की इंतहा थी, तो इस वजह से जो हैं फ़र्ज़ंद रसूल का घर उजाड़ने के लिए लोग निकले थे। बहरहाल देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, परवरदिगार आलम ने इंसान की फ़ितरत में एक चीज़ रखी है, वो है कि इंसान फ़ितरतन अमन पसंद होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक मोहल्ले में एक घर मुसलमान का हो, एक मसीही का हो, एक यहूदी का हो, एक हिंदू का हो, एक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, अगर इन 4 अदियान जो एक ही मोहल्ले में ये लोग रहते हैं, किसी भी घर में अगर कोई मुसीबत आ जाता है तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये मुसलमान का घर है, ये हिंदू का घर है, ये यहूदी का घर है, ये मसीही का घर है, बल्कि ये फ़ितरत का तकाज़ा होता है कि इंसानियत का ये तकाज़ा है कि जल्दी अपने घर से निकलो और इसकी मदद करो। बस ये इंसान की फ़ितरत में ये चीज़ पाई जाती है। एक बात तो तय है कि जहाँ पे हुसैन हो वहाँ पे अमनीयत होती है, जहाँ पे अमनीयत हो वहाँ पे हुसैनी होते हैं, जहाँ पे हुसैन हो वहाँ पे अदालत होती है, जहाँ पे अदालत हो वहाँ पर हुसैन होते हैं। हम जो रोते हैं, आज मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, बहुत से लोग हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं कि आप रोते क्यों हैं। भाई आपको भी रोना चाहिए। क्यों? इसलिए कि क्या आप अदल पसंद नहीं हैं? क्या आप हक पसंद नहीं हैं? हम रोते इसलिए हैं कि अदालत पर सितम हुआ है। हम रोते इसलिए हैं कि हक पे सितम हुआ है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अदल व अदालत की वजह से निकले थे, हक व हक्कानियत की वजह से निकले थे। क्या आप अदालत पसंद नहीं हैं?
क्या आप हक पसंद नहीं हैं? हक पे सितम हुआ था तो हम हक पे रो रहे हैं। अदालत पे जो सितम हुआ था हम अदालत पे सितम होने की वजह से रो रहे हैं। लिहाजा ये परवरदिगार आलम की एक ख़ास हिकमत है कि अगर कोई हक़ व अदालत के लिए कदम बढ़ाता है तो ये कुरान आवाज़ देता है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु रहमानु वुद्दा। तुम ईमान लेके आओ और अमल साले अंजाम दो, हम तुम्हारी मोहब्बत को पूरी बशरियत के दिलों में डाल देंगे। 1400 साल गुजरने के बाद ये बात साबित हो चुकी है कि जब दरबार यजीद में उस मलऊन ने जब बिन्त ज़हरा से कहा कि क्या तुमने देखा कि खुदा ने तुम्हारे घराने के साथ क्या किया, तो उस वक्त मेरी शहज़ादी ज़ैनब ने यही आयत, इस आयत की तलावत की थी, हमें शिकस्त नहीं हुई है और तुम हमें कभी भी नहीं मिटा सकते हो, इसलिए कि ये खुदा का वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जिस मोहब्बत को खुदा किसी इंसान के दिल में डाल देता है, फिर बशर में इतनी ताकत नहीं होती है कि उस मोहब्बत को किसी इंसान के दिल से निकाल दे। लिहाजा तारीख़ गवाह है कि 1400 साल गुजरने के बाद भी बड़े बड़े दिरहम खर्च हुए, बड़े बड़े दीनार खर्च हुए, यही मकसद था कि नाम हुसैन को मिटाया जाए। आप सबका मुख्तलिफ़ अदियान का यहाँ पे, मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान का यहाँ पे आपकी मौजूदगी बता रही है कि हुसैन कल भी हुसैन था, हुसैन आज भी हुसैन है, हुसैन ताब क़यामत हुसैन रहेगा। तो हज़रात देखिए, हर इंसान को जो हर मज़हब को किसी न किसी हादी, किसी न किसी अमीन की ज़रूरत है। मैं सिर्फ़ इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहूदियत को माशे का इंतज़ार है, मसीयत में मसीह का इंतज़ार हो रहा है, ज़रतुश्त में सूशियानीस का इंतज़ार हो रहा है, हिंदू में विष्णु का इंतज़ार हो रहा है, और बूदा में मित्रा का इंतज़ार हो रहा है, और इस्लाम में मेहदी का इंतज़ार हो रहा है, कि जिसमें कुरान इरशाद हो रहा है कि जब वो आएंगे तो कहेंगे अना बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम। लिहाजा हर दीन में किसी न किसी नाजी, किसी न किसी हादी का इंतज़ार हो रहा है। नाम मुख्तलिफ है, वजूद वही है, मंजिल वही है, रास्ते अलग है, आवाज़ वही है, लहजे मुख्तलिफ है। आवाज़ वही है, लहजे मुख्तलिफ है, मंजिल वही है और रास्ते मुख्तलिफ है। बहुत सी बातें हैं, मैं यहीं पे बस कर रहा हूँ एक 6 मिसरों से कि इस सेमिनार, इस कॉन्फ्रेंस, बेहतरीन सेमिनार के इनेकाद करने का मकसद क्या है। 6 मिसरों में अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रात अमन पसंद बने, अमन पसंद बने। आप देखें, बात से बात निकल रही है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं, अगर अमन पसंद न होते तो 25 साल अमनियत की वजह से घर में खामोश न बैठते हैं। अमन पसंद थे, 25 साल घर में खामोश रहें ताकि माहौल ख़राब न हो, 25 साल खामोश रहें। बसरा में अबुल अस्वद दाइली जो हैं, मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उनको काजी मुकर्रर किया था, कुछ ही अरसे के बाद उनको बरतरफ कर दिया। गौर से ज़रा सुनिए कि अमन किसे कहते हैं। बसरा में काजी थे, मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनको इस मनसब पे फाइज किया था और कुछ अरसे के बाद अज़ल कर देते हैं, बरतरफ कर देते हैं। अबुल अस्वद रोते हुए मौला के हुजूर आ जाते हैं, या अबुल हसन, मुझसे कौन सी ऐसी ख़ता सरज़द हुई थी, मुझसे कौन सी ऐसी गलती सरज़द हुई थी कि जिसकी बुनियाद पर आपने मुझे बरतरफ कर दिया है। अब ज़रा सुनिए, इसे अली कहते हैं। मौला ने कहा कि मैं खुद देख रहा था, मैं खुद सुन रहा था कि तुम्हारी आवाज़ मुल्जिम की आवाज़ से ऊंची थी। बात पहुंच गई है? तुम्हारी आवाज़ मुल्जिम की आवाज़ से बुलंद थी, ऊंची थी तुम्हारी आवाज़। ये अदालत नहीं है, इसको कहते हैं अमन, इसको कहते हैं अदालत, इसको कहते हैं दीन। वही मोहब्बत है, इमाम सादिक फरमाते हैं, और मोहब्बत वही दीन है। मोहब्बत बहर तूफ़ानी है जो साहिल नहीं रखता, मोहब्बत दश्त बेपाया है जो मंजिल नहीं रखता,
मोहब्बत एक बगोला है जो दश्ते दिल से उठता है, मोहब्बत पर्दे महमिल है जो मुश्किल से उठता है, मोहब्बत कीमिया है करबला की खाक में ढूंढो, मोहब्बत अक्ल परनी है उसे अफलाक में ढूंढो, और मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व गलाबाए फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलियन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व गैना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तव्वा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलावत कीजिए मोहम्मद आल मोहम्मद। Thank you so much, Maulana Jasan Sahab, for the beautiful words from your end, very enlightening for all of us. Thank you so much. Now I would like to invite on stage the New South Wales and ACT Community Engagement Community Liaison Officer, Sarjo Bah, on stage, please, to say a few words. Thank you. Keeping in mind that it's prayer time. Yeah, I will be very short. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my brothers and sisters. First of all, can I start by joining the previous speakers in acknowledging that we are in an indigenous land, and this land will always be their land, and thank them for their their generosity in accepting all in this country. And in the presence of peace, we know we are very honored by the invitation from our brother Abbas and Ijaz Khan from both association. I am one of the liaison officers. We have many of them. I know Sister Shafak also work with my colleague Hassan. Our role is to actually work with all communities, and we've been working very closely with your community in terms of encouraging this harmony. Australia is a great country. We all come from many, many parts of the world. And we talk of peace today. And when we talk of the Australian values statement talks about freedom, equality, justice, and fairness for all. And we know as Muslims, we know exactly what that means. This is not a value that we also believe as an Australian value. This is our core values as Muslims. That is, no one is better than anyone except by the fairness of Allah. The black is not better than the white. The white is not better than the white except by the fairness of Allah. That is a verse from the Holy Quran. We know, and I want to thank you once again for your invitation. And please feel free to reach out through Abbas and through Sister Sama. If there is anything we can support your community with, we are here to work together. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much, Sajal Bhai, and thank you to all the valuable speakers. And this is the end of the ceremony. May Allah bless all of you. दुआ के दिन है, जज़ा के दिन है, विला के दिन है, अज़ा के दिन है, दुखी दिलों की दुआएं सुन ले, मलंग मस्तों को चैन दे दे, हसब नसब का ख्याल करके मेरे खुदा बांट दे तू मरातिब, यजीदियों को यजीद दे दे, हुसैनियों को हुसैन दे दे, हुसैनियत जिंदाबाद। यहाँ आप सबका बहुत शुक्रिया और तबर्रुक का इंतज़ाम है। प्लीज़ तबर्रुक लेकर चाय पीकर जाइएगा। जज़ाकल्लाह। I'll give it. Thank you.